Hello viewers, welcome to my channel online biology tutorials. In this live of today, I will be teaching the difference between turgid, flaccid and plasmolysed cell. This is one of the important phenomena that has been taught in class 9 science chapter 2, cell, the building block of life, and this concept is very much useful for ICSE board students as well. In NEET also this funda is applicable. I hope my voice is clear. Yes, I have checked my screen. It is very much clear. So we begin here with the turgid, flaccid and plasmolysed cell description. Always remember, whenever you are talking about a turgid cell is a one which is a swollen cell. Okay, so turgid cell is always going to be a swollen cell, whereas a flaccid cell is a one which is shrinked in its size. And plasmolysed cell is a bit different from flaccid. It is shrinkage of extreme level. Shrinkage of extreme level so that the protoplasmic जो components हैं they come in the center of the cell. This will become more clearer to you as I explain how does a cell become turgid, what pressure is developed in a cell. So let's begin with the description of first the hypotonic solution and the hypertonic solution. Whenever we are defining any solution as hypotonic, that means its concentration is less. So solution, as you know, is made up of two components, solute and solvent. So when the solute concentration is low or less, the solution is known as hypotonic. Whereas hyper means more and tonic means concentration. So when the solute concentration is more, the solution becomes hypertonic. Always remember, the solvent in it will be more because it is inversely proportional relationship, and here because the solute is more, thus the solvent has to be less, right? So hypotonic solution has low solute and high solvent concentration. Now as such, you cannot call any solution as hypo or hypertonic. You need to talk about the cell that is there in it. So suppose I have taken a container and in that container I have taken a cell. Now inside this cell, the concentration of solute and solvent will be opposite to that of the solution. So here I am mentioning the concentration of solute and solvent in the solution because the solution is hypotonic. Hypo means less concentration of the solute. So I am making a down arrow which means low. I am making a up arrow that means high. So a solution is not, we cannot use the word high concentration and low concentration unless we are not talking about a cell that is dipped in it. So the cell will have solute concentration here because it is low, so it will be opposite here and it will be high. And solvent concentration will be low here because here it is high. So how can we define a hypotonic solution? A hypotonic solution is a one which has low solute concentration and high solvent concentration with respect to the cell dipped in it. A cell has high solute and low solvent concentration. First of all, आपको ये समझ आना चाहिए कि hypotonic हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसमें लेस कंसेंट्रेशन है सॉल्यूट की बट सॉल्वेंट की मोर कंसेंट्रेशन है. अब
it is with respect to the cell which is dipped in it. तो सेल में उल्टी कॉन्सेंट्रेशन है. अब हम लोगों को पता है कि हमेशा whenever we are talking about the cell, the movement always takes place from the region of high solvent to the region of low solvent. So whenever we are talking about osmosis, it is always from high solvent to low solvent. Now if you notice, the up arrow here means high, the down arrow here means low. So this was the concentration of the solution. So here the concentration of solvent is high, thus I'm just changing the color, thus the solvent from the solution will move inside the cell, and because of which over a period of time in this solution itself the cell will become swollen, the cell will become turgid. So a swollen cell is also known as a turgid cell. Now suppose you dip raisins or kishmish overnight in water, next morning you will find that they have become swollen or they have become turgid. So inside the turgid cell there is a pressure which is known as Turgid pressure or TP. So Turgid pressure will be developed from the inside towards the wall. Always remember, the direction of Turgid pressure will be from inside towards the wall. So this is how turgid and swollen concept is explained. Now here one more thing before I conclude this turgid topic, that here the cell is gaining the solvent. Which phenomenon is happening? Osmosis. Because the solvent is going inside, that is why this is known as endo-osmosis. Endo means to let in. So here the cell has gained the solvent, that is why the cell has become turgid, and inside there is a pressure which is known as Turgid pressure, generally applicable on the wall from the center. Okay, this concept should be clear by now. Now let's talk the opposite of it, and we will be talking about the concept of flaccid now. Now to understand the concept of flaccid, let's talk about hypertonic solution. So I have taken a container and this has got hypertonic solution. Now hypertonic solution is a one in which solute concentration will be high. Hyper means more. So solute concentration will be high and solvent concentration will be low. As such, you cannot call any solution as hypo and hyper unless you are talking about in the cell that is dipped in it. So suppose I have taken a cell and this cell has got opposite concentration. So here the solute will be low or downside and solvent will be up or high. We know that solvent always moves from high concentration to the region of low concentration. So here osmosis will be happening from the cell to the solution. So over a period of time, the container which has got hypertonic solution, in that the cell will be shrinked. Okay. So here osmosis is happening from cell to the solution. So that is why we will call it as exoosmosis. Now this shrinked cell is known as a flaccid cell. Very important. जब केवल श्रिंकिंग होगी सेल की, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर रेजिन्स को एक रात डिप करा वाटर में, नेक्स्ट मॉर्निंग दे विल बिकम टर्जिड or swollen because of imbibing water, because of endo-osmosis.
अगर आप उसी सोलन रेजिन को हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में डिप कर दो ओवरनाइट, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन आप कैसे बनाएंगे? यू विल टेक more solute and less solvent. This is what I have written for you. So अगर आप 10 tablespoons of salt लो और उसको solvent में dissolve कर दो तो आपका हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन बन गया। तो आप सोलन रेजिन्स को हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में अगर डालोगे तो अगली मॉर्निंग वो आपको फ्लैसिड या श्रिंक करी हुई मिलेंगी। अब डिफरेंस क्या है प्लास्मोलाइज्ड सेल में और आपका फ्लैसिड में? एक बात हम लोगों को पता है कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, बट हमें ये भी पता है कि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। पर प्लाज्मोलिसिस या प्लाज्मोलाइज सेल आपको प्लांट सेल में भी मिलेगी, एनिमल सेल में भी मिलेगी। प्लाज्मोलिसिस कहते किसे हैं? नाउ फॉर एग्जाम्पल, आपकी ये सेल मेम्ब्रेन है विच इज़ द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ एन एनिमल सेल, और यहाँ से अंदर से आपका ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट अंदर से आपका शुरू हो रहा है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट मीन्स द साइटोप्लाज्म इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, इट इज़ अ जेली लाइक मटेरियल। तो जब आपकी सेल फ्लैसिड होगी आपको इसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट सेंटर में दिखाई नहीं देगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी जगह पे होगी, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट अपनी जगह पे होगा। बट अगर आपने एक सेल को कॉन्टीन्यूसली हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में ज़्यादा टाइम के लिए रख दिया, सपोज 2 days के लिए रख दिया, 3 days के लिए रख दिया, तब क्या होगा? जो एनिमल सेल है उसमें जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो सेंटर में आ जाएंगे। आप देखो यहाँ पर गैप जो है वो बढ़ गया है, इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड। सो ये जो आपको सेल दिखाई दे रही है ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, right? This is a plasmolysed cell in which the cytoplasmic contents have come to the center, and as a result there is a gap formed between the membrane and the cytoplasmic content. अभी मैंने इस लेयर को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन माना था बिकॉज आई वॉज टॉकिंग अबाउट व्हाट? आई वॉज टॉकिंग अबाउट एनिमल सेल। बट अगर मैं इसी सेल को अब सेल वॉल से बाउंड कर दूं तो ये मेरी बन गई प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में भी ऐसा ही देखा जाएगा, प्लाज्मोलिसिस उसमें भी देखी जाएगी, बट उसमें प्लांट सेल में सेल वॉल ज़्यादा प्रोटेक्शन का काम करेगा बिकॉज इट इज़ मोर रिजिड इन कॉम्पोजिशन। दैट इज़ वाई प्लांट सेल की एग्जिस्टेंस काफ़ी दिनों बाद ख़त्म होती है, बट एनिमल सेल के ऊपर हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन का ज़्यादा असर होता है और उसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स इतने ज़्यादा सेंटर में आ जाते हैं कि वो सेल मर जाती है। आपको पता है सेल को इनफ स्पेस चाहिए सेल ऑर्गेनल्स को, अदरवाइज वो काम नहीं करेंगे। तो अभी के लेसन से हमने क्या सीखा कि हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? एंडो ऑस्मोसिस होती है, और एंडो ऑस्मोसिस से सेल कैसी बनती है? टर्जिड या फिर सोलन, राइट? इसके ऑपोजिट जो सॉल्यूशन था वो क्या था? हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में सेल क्या करती है? एक्सो ऑस्मोसिस करती है। अगर कम देर के लिए रहती है तो फ्लैसिड होती है, केवल श्रिंक करती है। बट अगर आपकी सेल लॉन्ग आवर्स के लिए है तो सेल कैसी हो जाएगी? प्लास्मोलाइज्ड सेल हो जाएगी। और फिनोमिनन का नाम क्या लेंगे हम? प्लाज्मोलिसिस। तो एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है, इसीलिए वो ज़्यादा देर रेजिस्ट नहीं कर पाएगी हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन को। अब एक और बात आप याद रखेंगे कि टर्जिड सेल के अंदर जो प्रेशर होता है उसे हम क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर, अगर ये एक सोलन सेल है तो टर्गर प्रेशर की डायरेक्शन कैसे होगी? सेंटर से बाउंड्री की तरफ। बट हमारी अगर कोई सेल फ्लैसिड है तो फ्लैसिड सेल के अंदर क्या लगेगा? वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर को हम कैसे एब्रीविएट करते हैं? WP।
टर्गर प्रेशर को कैसे एब्रीविएट करते हैं? टीपी। तो अगर कोई सेल फ्लैसिड होना शुरू हो रही है तो उसके अंदर वॉल से प्रेशर लगेगा सेंटर की साइड। सो आप देखो टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर की डायरेक्शंस उल्टी हैं। अगर आपकी सेल फुल्ली टर्जिड है तो फुल्ली टर्जिड सेल में टर्गर प्रेशर विल बी इक्वल टू वॉल प्रेशर। बट अगर आपकी कोई सेल प्लास्मोलाइज्ड हो गई है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसके अंदर वॉल प्रेशर इज ग्रेटर देन द टर्गर प्रेशर। ठीक है, आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन और सेल में सेम होती है। सो नेट मूवमेंट अगर थोड़ा सा वेरिएशन है भी इधर उधर, तो अगर पानी सेल के बाहर जा रहा है या सेल के अंदर जा रहा है, इतना एविडेंट या नोटिसेबल चेंज नहीं होगा कि सेल आपको स्वोलन या फ्लैसिड लगेगी। So if this concept has been understood, you can share it with your friends also. I'll get back with another video tomorrow.